Are you confused if you should invest your money into stock markets and mutual funds every single month, or should you gather a good amount of money and invest everything in one go? Do not worry, because in this video we are going to understand what is the right approach for you, and at the same time we'll cover the concepts like SIP, lump sum investments, NAV, XIRR, CAGR. In the last two videos, we covered what are mutual funds, types of mutual funds, and how do you select a perfect mutual fund for yourself. So without wasting any further time, let's start off with the concepts. So let's start with SIP and lump sum investments. Both of these are investment techniques, but these are different from each other. SIP stands for Systematic Investment Plan. That means an investor will invest a certain amount of money every single month into a particular stock or mutual fund. Just as an example, you as an investor are investing say 10,000 rupees every single month, and there is a fixed date, for example 10th of every month. So if you're investing 10,000 rupees on 10th of every single month, this is called doing an SIP. On the other hand, lump sum investment technique is when the person or investor decides not to invest his money every single month, but rather gather that money and invest everything in one go. Just as an example, there is a person who is investing 10,000 rupees every single month for 5 months, and he has invested 50,000 rupees. Say on January he invested 10,000, then Feb, March, April, May. On the other hand, there is a person who did not invest 10,000 rupees on these 5 months, but rather he invested 50,000 rupees in one go. So this is your lump sum investments. Now, how do you decide if you should go for SIP or lump sum investments? It's very simple. पहली बात करते हैं SIP की. SIP कौन लोग करते हैं? If you do not have the time, knowledge and skill to study the market, to read the market, then obviously SIP is the only option. If you do not know the market is going up or down from this very point, what you will do? You will go for an SIP. You will invest say 15,000 rupees, 20,000 rupees every single month, and it is effortless. सबसे बड़ा reason why people go for SIP, it is effortless. आलसी हैं लोग. तो उसमें क्या होगा? Every single month 10,000 rupees या 20,000 rupees will be deducted from your bank account, and they will automatically get invested into mutual funds. As simple as that. On the other hand, there are people who have the skill, knowledge and time, and at the same time they want to produce better returns. What they will do? ठीक है, हर महीने 10,000 20,000 नहीं डालेंगे. लेट्स वेट फॉर द मार्केट टू कम डाउन, अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेक्स्ट मूव. सो इफ यू ऑलरेडी नो दैट द मार्केट इज गोइंग टू डंप फ्रॉम हियर, व्हाट यू विल डू? विल यू गो फॉर एन इन्वेस्टमेंट? द आंसर इज नो. जहां पे SIP वाला 10,000 रुपये अभी भी इन्वेस्ट करेगा, यहाँ पे जो लंप सम इन्वेस्टमेंट वाला बंदा है वो वेट करेगा, एंड ही विल वेट फॉर द मार्केट टू कम डाउन. और जब उसको लगेगा कि यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, ही विल इन्वेस्ट एट दैट वेरी पॉइंट. और ऑब्वियसली इस बंदे के रिटर्न्स बेटर होंगे. दिस पर्सन विल मेक मोर रिटर्न्स, मोर मनी, बिकॉज ही हैज़ इन्वेस्टेड एट अ लोअर प्राइस. ऑन द अदर हैंड, अगर उसको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है, एट द सेम वेरी पॉइंट ही विल इन्वेस्ट ऑल 50,000 रुपीज़, 1,00,000 रुपीज़, वॉट एवर ही हैज़ एट दैट पॉइंट इन टाइम, and he will generate better returns. But obviously for this you need to have that skill, knowledge and time, which not a lot of people will have. Now let's see the difference between the characteristics of two different persons, the person who goes for SIP versus the person who goes for lump sum investment. So on the screen you can see the chart of Nifty 50, and the charting that you see on the screen is something we forecasted of what is going to happen with Nifty 50. And the things are going in our favor so far. We marked 3 different zones, and the market is bouncing perfectly on our zones. For example, this was the first bounce, this was the second bounce, and here we see a beautiful bounce from our zone number 2. Now, how will these two different people act in such market? The person who is for SIP will invest 10,000 rupees every single month, no matter what. So just imagine this is a monthly chart. Just imagine this is a monthly chart, and the person who goes for SIP is investing his money 5 times at these 5 different places. This is 1, 2, 3, 4, 5, and this will be the average price of his investment, obviously. Now just imagine he invested 10,000 rupees when the market was at all-time high. Obviously when the market is crashing, he will lose his percentage and the returns that he has gained. Whereas there is another person who goes for lump sum investment. He saw that the market has just changed the character, the market looks bearish, and the market can dump down. So I will not invest a single penny right now. I'll wait for the market to come to my areas, I will wait for confirmation, and then I will enter and invest. And this is what the person does. He will try to look for confirmation here, he will try to look for confirmation here. Okay, he
Just suppose he gets the confirmation, and this is the place where he will invest his money. And if the market becomes bullish from here and the market starts to go up, the person with lump sum investment will make good return. But this is a skill. This is skill to read the market. Suppose the person who is going for lump sum investment has made all his investment on all-time high. He invested 50,000 rupees, 1 lakh rupees there. He will lose a lot of money. But if he invests at the right spot, he will make immense returns. So this is the major difference, and you should decide if you have knowledge, skill, and time to go for the lump sum investments. I go for lump sum investment, and this is how you decide. Now let's understand NAV. NAV stands for Net Asset Value. सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो ये म्यूचुअल फंड के पर शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू है. नाउ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग स्लाइटली बेटर, एक छोटा सा कंपैरिजन कर सकते हैं बिटवीन शेयर प्राइस एंड NAV विच इज़ नेट एसेट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड. देखो दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर आप रिलायंस का एक शेयर खरीदने जाते हो तो आपको से 3,000 का मिलता है, 2,500 रुपये का मिलता है. और अगर आप एक म्यूचुअल फंड का एक शेयर खरीदने जा रहे हो तो वो आपको से 26 रुपये का मिल रहा है. सो दैट 26 रुपये इज़ NAV. So I hope that is clear. Now if you just look at the screen, there is this graph on Grow application. और यहाँ पे आपको टाइम के साथ NAV पता चल जाएगा कि इसकी NAV की वैल्यू कैसे अप्रिशिएट कर रही है. जैसे जैसे NAV की वैल्यू ऊपर जाएगी वैसे वैसे आपके इन्वेस्टमेंट्स एंड रिटर्न्स की वैल्यू भी ऊपर जाएगी. एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे व्हाट वाज द NAV फॉर दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट. हाँ वही है. 8th क्लास में जो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था एग्जैक्टली वही चीज़ है ये. सो बस इसका फ़ायदा क्या है. सपोज यू वांट टू कंपेयर डिफरेंट एसेट क्लासेस. आपको गोल्ड कंपेयर करना है, आपको रिलायंस कंपेयर करना है, आपको एक्सिस ब्लू चिप का म्यूचुअल फंड कंपेयर करना है, आपको क्रिप्टो कंपेयर करना है, आपको FDs कंपेयर करना है. ये 5 डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं. आप इसको आपस में कंपेयर कैसे कर पाओगे. सो देयर हैज़ टू बी अ परसेंटेज, देयर हैज़ टू बी समथिंग जो आपको इन सारे एसेट क्लासेस को कंपेयर करने में हेल्प करे. सो वो है CAGR. CAGR बताएगा कि हर साल किस रेट पे आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंक्रीज़ होता है. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं और आपको पूरी चीज़ समझ आ जाएगी. सपोज़ 2020 से 2021 में आपके 100 रुपये 130 रुपये बन गए. इसका मतलब आपको 30% रिटर्न मिला. 2021 से 2022 में आपके वो 130 रुपये 140 बन गए. इसका मतलब यहाँ पे 7.69% का इंक्रीज़ आया. अब आप देखोगे कि दो वैल्यूज़ हैं आपके पास, एक 30% इंक्रीज़ था, एक 7.69% इंक्रीज़ है. और ये हुआ है 2 सालों में. क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा परसेंटेज ढूंढ सकते हैं जिससे इन दो नंबर्स को हटा के मैं सिर्फ एक नंबर में बात कर पाऊँ और सारी कैलकुलेशन इजीली कर पाऊँ. सो दीज 2 परसेंटेजेस विल बी रिप्लेस्ड बाय CAGR, जिसका फॉर्मूला एकदम वही है जो आपके 8th क्लास में था. अमाउंट इक्वल्स प्रिंसिपल 1 + R/100 रेज़ टू द पावर t. सो CAGR कैलकुलेट करते हैं. प्रिंसिपल हमारा 100 है, अमाउंट हमारा 140 है, टाइम आपका 2 ईयर्स है, और जो आपको R है वो कैलकुलेट करना है. सो इफ यू डू द कैलकुलेशन, R विल कम आउट टू बी समवेयर अराउंड 18.32%. सो दैट इज योर CAGR. सो जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई, multiply 100 with 1.1832 and again with 1.1832, you will get 140, and that is why that 18.32% is your CAGR. और अब इस CAGR से आप सारे एसेट क्लासेस कंपेयर कर सकते हो. आप गोल्ड का CAGR निकालो 5 साल का या 3 साल का, आप स्टॉक्स का निकालो, आप म्यूचुअल फंड्स का निकालो, आप FDs का निकालो, क्रिप्टो का निकालो, सबका निकालो और उसको कंपेयर करो. आपको पता चल जाएगा कि पिछले 5 सालों में कौन से एसेट क्लास ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है. सो दिस इज़ योर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट. आपके जो डिफरेंट डिफरेंट साल में डिफरेंट रिटर्न्स आए हैं उसको एक स्मूथिन कर दिया इसने, एक सिंगल रिटर्न ने, और आपको एक सिंगल वैल्यू दे दी है. So this is the concept of CAGR. The last one on the list is XIRR, Extended Internal Rate of Return, which is as good as internal rate of return. But what is IRR? So it is the amount of return which you are expecting from your investment. So just as an example, just suppose Cryptera has an IRR of 15%. That means if you invest 1 lakh rupees, you can expect 1,15,000 rupees by the end of the year. But how is it different from CAGR? So it's simple. When you calculate CAGR, what was the thing? What was the formula? You are just incorporating the principal and the final amount. तो जितने भी बीच में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स थे या डिफरेंट वैल्यूज थी, यू आर नॉट कंसिडरिंग दैट. आप सिर्फ इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू से डील कर रहे हो. बट व्हाट इफ देयर वाज समथिंग लाइक SIP,
या आप हर मंथ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और आप उसका रिटर्न निकालना चाहते हो। और आप देखोगे एवरी सिंगल टाइम व्हेन यू यूजिंग ग्रो एप्लीकेशन, यू विल ऑलवेज फाइंड अ कॉलम ऑफ XIRR इन योर म्यूचुअल फंड टैब्स। जब भी आप अपने रिटर्न्स चेक करोगे इट विल शो यू XIRR, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स में जब आप SIP करोगे, what you will do is you will make some investment every single month. For example, for 12 months you invested 10,000 rupees. By the end of year you invested 1,20,000 rupees and you received a return of 1,50,000 rupees. But understand कि ये return आ कहाँ से रहा है? जो आपका first investment था, it is invested for 12 months. जो आपका second investment था 10,000 rupees का, it is invested for 11 months. And similarly if you go down, जो आपका last investment था, it is just invested for 1 month. और उसके बाद आपने अपना पैसा बाहर निकाल लिया जस्ट सपोज। सो आपका हर इन्वेस्टमेंट जो आपने डिफरेंट मंथ्स में किया है, इट विल हैव अ डिफरेंट फाइनल अमाउंट बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो इन सब को इनकॉर्पोरेट करके एक जो सिंगल परसेंटेज आप निकाल सकते हो, दैट विल बी XIRR। अब इसको कैलकुलेशन करना इट्स सिंपल बट इट इज़ अ वेरी वेरी लेंथी प्रोसेस। सो जस्ट अवॉइड दैट बट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि XIRR है क्या। तो जब भी आपको कुछ ऐसा कैलकुलेट करना है जिसमें आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो और उसका रिटर्न प्रोड्यूस कैसे होगा, दैट विल बी कंक्लूडेड बाय XIRR. So I hope you understood the concept. So thank you so much guys for joining in. I hope I have delivered what you were expecting out of the video. And just in case you loved the video, please give us a thumbs up, write down a beautiful comment and subscribe to our channel for more of such videos. I'll see you in the next video. Take care. Bye bye.